Good morning to everyone. This is an elective course for the sixth semester session 25-26, and it is for B.Tech students of Jharkhand University of Technology. We'll discuss today the Zoom call guideline. We'll go through the class schedule. We'll go through the faculty and the mentors. We will talk about the course benefit कि आपको स्टूडेंट्स को इस कोर्स से क्या बेनिफिट होगा. We'll go through the course description, and then at the end of the class we will have a class interaction where we jointly, all of us, will identify the unmet need in and around campus and local industry. So we'll have an interaction between, and I'm expecting that all of you students will have some idea कि कौन सी unmet need है which you want to work on. And I've requested the professors, all the professors of the institutions, that if you have a project which your local industry has requested to work on, please identify that and let us make that as a part of the project of this program. So the Zoom call, to ensure we have a productive and focused session, please follow these simple guidelines. आसान एकदम. इसको हम लोग को बिना डिस्टरबेंस के करना है. ऐसा ना हो कि कोई एक स्टूडेंट की तरफ से अगर डिस्टरबेंस हो जाए और तो सारी क्लास को उसका अफेक्ट होगा. तो मेरा आपसे अनुरोध है कि let us as a team member, you are all part of a team. Let us make sure that we make the best class so that everyone, each one of you, gains maximum out of it. So when the class start, everybody's mic will be muted. And if you have a question, अगर सवाल है आपको, तो you can raise hand. आपका you can आप हाथ खड़ा कर सकते हैं. You can raise hand. That feature is in your which is available to you. Then you will be recognized by the administrator, and when administration calls upon you, then you can unmute your mic and ask your question. Also, we will have an active chat. So the chat box. दूसरा जो है कि कोई भी सवाल हो, immediately आप chat box में आप लिख सकते हैं. चाहे वो कैसा भी सवाल हो. You will get an answer to your question, or that your concern will be addressed. And then stay present. That means class में आप class के साथ रहिए. जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी कोई आपका स्टूडेंट कुछ शेयर करना चाह रहा है या प्रोफेसर कोई कहने चाह रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप उस पर ध्यान दें और सुने उसको ध्यान से. Because that's how we all together we will learn from this. इस कोर्स में, ये कोर्स है 5 यूनिट का है. इट इज एन इलेक्टिव कोर्स. इसका नाम है एडवांस एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें 3 यूनिट हैं लेक्चर के और 2 यूनिट हैं ट्यूटोरियल के. एवरी सैटरडे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वो लेक्चर होगा. एंड देन ट्यूटोरियल एवरी ट्यूसडे 9 से 11 बजे तक. और फिर उसके बाद when you are assigned to a project or to a startup or to a team, when you have a team, then you will also be assigned a mentor. So you will be discussing with that mentor and developing your startup idea and startup team. So, and that time, आप फिक्स कर सकते हैं अपने मेंटर के साथ और अपने टीम मेंबर के साथ कि आप लोग किस दिन किस समय मिलना चाहते हैं. तो वो आपको हर हफ्ते 1 घंटे मिलना है. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 हफ्ते में एक बार मिले 2 घंटे के लिए, वो भी कर सकते हैं. और फिर उसके बाद इसमें 2 मिड टर्म होंगे,
एक फाइनल एग्जाम होगा, और आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जो फाइनल प्रेजेंटेशन जो आप बनाएंगे, जो बीएमसी बनाएंगे, जो कि अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाएंगे, so that will be the that you have to present in the final, as part of the final. So, professor, we have Professor Jaswa teaching entrepreneurship since 2010 at IIT Bombay and IIT Gandhinagar and other places. Then we have Professor Suresh Roy, extensive experience in the industry, in the manufacturing, in the new product introduction, in the supply chain. So he will be his expertise. He will be sharing his expertise and guiding you through this course. I'm Ramesh Yadav. I'm also a serial entrepreneur, and I've been teaching entrepreneurship at BIT Sindri and JUT for almost like last 9 years. Professor Prakash Kumar, he's the head of the Department Production and Industrial Engineering at BIT Sindri, and he is the one who is the heartbeat of this program, actually. He has been supporting it from day one. And so I want to say, Dr. Prakash Kumar, thank you very much. Your vision is becoming true here. And then we'll have invited guest speakers, which are industry experts. They are all industry experts, and you will get to hear those. Mentors, we'll have the mentors. Those mentors will be the entrepreneurs. Those mentors will be the faculty member or the alumni. And they will be, of course, the industry experts, and they may be the business leaders also. So those are the ones which we will have as a mentor. So there will be one mentor for each team, which our target is. Fit by taking this course. ये सवाल आपका होगा। आप पूछ रहे हैं कि इससे मेरे को क्या लाभ होगा? How it will benefit me? How it will help me build a successful professional career? कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर, तो या तो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, दैट इज ए प्रोफेशनल कैरियर, या आप इंट्राप्रेन्योर बनना चाहते हैं कि आप एक बड़ी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं या दूसरी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, तब तो आप इंट्राप्रेन्योर बनेंगे। और अगर आप बोलते हैं कि नो, मैं आई वांट टू बी ए जॉब क्रिएटर, then you become an entrepreneur. But it does not matter what you decide. जो स्किल सेट है दोनों का एग्जैक्टली वही है। So, what are you going to learn? You are going to learn master critical thinking. इसका मतलब you will navigate through the real world challenge, जो कि प्रॉब्लम जो है, क्या दुनिया की क्या प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, और scaling it into a business. Either you as an entrepreneur or as an entrepreneur, you're working for a company and you have found that niche, you have found that, defined that pain point, and how you're going to scale it as a business. Think creatively, develop a mindset that turns obstacles into opportunity. अगर कोई चीज प्रॉब्लम है आपको, आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, तो आप ये मत कहिए कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, ये मत कहिए। माइंडसेट ऐसा कीजिए कि कैसे करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। What do I need to do? Do I need to create a new process? Do I need to create a new program? Do I need to create a new material? No matter what it is, think creatively. That's what, so that becomes an opportunity. Take that as an opportunity. जो obstacle है उसका opportunity बनाया, and then you create something out of it. And then you will thrive anywhere with these skill set which you have acquired. You are going to thrive everywhere, no matter what you do. You will gain the tools to lead your own venture. आप अपने आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ जॉब क्रिएटर, यू विल बी एबल टू लीड योर ओन स्टार्टअप, और
Innovate within an existing organization. If you're working for other organization, you will innovate there. That's what you will be doing. That's where your success will be. And that's why you'll be outstanding there, because you have taken this course and you have followed these skills. The another other important thing which is happening now, which is changing, you hear about this coding. आजकल पहले कितने कोडर की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही वो इट कैन डू द कोडिंग बाय इटसेल्फ. 2022 19 नवंबर के पहले, तब तक जो इकोनॉमी थी, पिछले उसके पहले 40 सालों से जो इकोनॉमी थी, दैट वाज द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, जिसके पास नॉलेज है वही कंट्री बढ़िया काम करता है. चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो. Knowledge थी, they were using that knowledge to create a value for the others, and that's how they made they kind of knowledge base increased. And those who had the knowledge, they said they were very, very successful, because knowledge was not accessible to everybody. Whatever the reason is, it was not accessible. चाहे किताबों के लिए पैसे नहीं थे, या वो पब्लिकेशन नहीं था, या जो पेटेंट था ऐसा था कि आप यूज नहीं कर सकते थे. लेकिन 19 नवंबर 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि ये सब बदल गया. कैन यू टेल मी Can you tell me what happened on the 19th November 2022? Think about it. And you are using it every day now. उस दिन जो नॉलेज पर जो जो रुकावट थी, नॉलेज जो फैल नहीं पा रही थी, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो रही थी, उस दिन वो फ्री होगी. क्योंकि उस दिन बना चैट जीपीटी. That day the chat GPT was released. And now that means the knowledge was available to everyone. Everyone, it was available to everyone in the palm of their hand. On the desktop, on their laptop, they had, everyone had that knowledge. आपके पास, you as a student, you have the same knowledge base. वो जो इंफॉर्मेशन जो है, वो सेम इंफॉर्मेशन आपके पास है, वही नॉलेज मेरे पास है, वही नॉलेज जो इसरो के साइंटिस्ट है उनके पास है, वही नॉलेज नासा के जो साइंटिस्ट है उनके पास है, वही नॉलेज जापानीज के साइंटिस्ट है उनके पास है. सबके पास वही नॉलेज है. एक्सेस जो है वही नॉलेज एक्सेस, और वही नॉलेज आपके पास भी एक्सेसिबल है. तो now that knowledge is accessible to everybody, अब है कि उस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करेंगे. हाउ, एंड दैट्स व्हाई आप क्यूरियस बनते हैं कि अरे उस नॉलेज है तो मैं कैसे उसको इस्तेमाल करूंगा. यू बिकम क्यूरियस अबाउट दैट. यू बिकम क्रिएटिव. अरे इसको तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूं. यू बिकम क्यूरियस एंड क्रिएटिव. एंड उसलिए जो अभी जो इकोनॉमी जो चल रही है, विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर अनदर I don't know how many years, 20, 30, 40, 50 years, it will be curiosity and creativity based economy. Of course, AI is taking over. We know that, right? But AI की जो सोचने की शक्ति जो है, क्या सोचना है, वो तो आप बतलाएंगे. एंड दैट्स वेयर योर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी विल कम इनटू पिक्चर. एंड दैट्स व्हाट वी विल लर्न इन दिस कोर्स.
So here is the advanced entrepreneurship course. These are the course detail. You will develop a business plan. You will build a product. You will have learn about the startup financing. You will gain practical experience, and you will cultivate leadership skills, which are so important. And then also you will course के outcome है आप you will become a you will learn how to be a job seeker, or you will learn how to be a good entrepreneur. You'll be able to identify the opportunities. You will know all about the MVP. You will know all about the critical thinking. All of those things you are going to learn from this. And then details of the course, you'll have the cultivate leadership skills, fundamental of startup you will learn, उसकी जो वेरियस कंपोनेंट है, बीएमसी बिजनेस मॉडल कन्वर्स के, पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, all of that you will learn about fundraising फॉर स्टार्टअप, कहाँ से मिलेगा पैसा, कैसे मिलेगा, किसके पास करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, ऑल दोज थिंग्स यू विल लर्न अवर. एंड देन सेल्स एंड मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो भी कुछ बना रहे हैं, जो भी कुछ जो आइडिया है आपके पास आप अपने लिए बना रहे हैं या आप जहां काम करते हैं उसके लिए बना रहे हैं, तो आप वो किसके लिए बना रहे हैं, वो कस्टमर के लिए बना रहे हैं ना. तो यू लुक एट वो, क्योंकि कस्टमर या अगर कस्टमर की प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर दी, यू हैव आइडेंटिफाइड ए कस्टमर प्रॉब्लम, और तो अब कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो कस्टमर विल कम टू यू एंड कस्टमर विल पे यू फॉर योर वर्क. And that's why you will learn the importance of a customer. Whatever you make, there has to be a need. That thing you will learn here. Sales and marketing. And then you'll learn the various business strategy, and then intellectual property. And then, of course, there are a few books here which are all written here. And then now we talked about what are the content, what are we going to do, what are we going to study, what are we going to achieve from this course. Now it's the class activity. So identifying the unmet need, the pain points, अपने चारों तरफ देखिए, कॉलेज के चारों तरफ देखिए कि कहां पर पेन पॉइंट है. आइडेंटिफाई वो नीड है कि कहां पर वो पेन पॉइंट हम लोग कम कर सकते हैं. अराउंड अपने घर के चारों तरफ, अपने कॉलेज के चारों तरफ, अपने लोकल इंडस्ट्रीज के साथ क्या प्रॉब्लम है, लोकल स्कूल, हॉस्पिटल, विलेज, गवर्नमेंट, इन सब चीजों में कहां पेन पॉइंट है. सो पहली क्लास में, इन द फर्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक 1 hour to go and try to identify those which are the unmet need, or कोई भी need. You have to define. So what I want you to do, the students and also the faculty member, go and think about, write down at least 2 or 3 unmet need जिस पर कि आप काम करना चाहते हैं. Or all the professors, because you have been dealing with some of the local industry, तो इंडस्ट्री के ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जो कि इंडस्ट्री करना चाहती है, where you can actually help them out in doing it. So I want to wish all of you very good luck, and I'm looking forward to hearing your ideas, your startup idea, that unmet need, जो भी हो, that pain point जिस पर कि आप करना चाहते हैं. I want you to be write down, and in the class we will talk about that. So we'll spend about 1 hour, and let us make that a very interactive class. Okay, thank you so much. I am looking forward to your participation, students, your participation, and also the faculty member who are teaching entrepreneurship in their respective colleges.
I'm expecting you to be part of this, and you will also become the mentor for the students. Thank you very much, and good luck to you.